अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट टाइम हमने 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज के MCQs सॉल्व करेंगे। अगर डियर आपको इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट MCQs इज़ The activity series of metals arranges metals in order of their atomic mass, density, ease of oxidation or ease of reduction. So there, the activity series ranks metals by their tendency to lose electrons and undergo oxidation. So the exact answer is third option, ease of oxidation. Next MCQs is according to the activity series, which of the following metals would most readily displace hydrogen gas from dilute acid? Copper, silver, magnesium or platinum? So there, magnesium is far above hydrogen in the activity series, so it displaces hydrogen gas easily. So the exact answer is magnesium. Third MCQs is the salt bridge allows transfer of dash in zinc copper voltaic cell. Zincine, sulfatine, both या none of these. तो dear, the textbook of 11th chemistry topic 10.15 page 223 describe the salt bridge as allowing movement of ions and then clarifies its soaked in a saturated solution of potassium nitrate. This indicate that the salt bridge on inert ions potassium and nitrate are responsible for maintaining ionic balance by migration into half cells. It does not state that zinc or sulfate ions move through the salt bridge itself. So the exact answer is none of these. The fourth MCQs is if zinc copper galvanic cell works idly after complete discharge, both compartment will have copper sulfate solution, zinc sulfate solution, copper ions or zinc solid. So there zinc is oxidized to zinc ion and copper is reduced to copper solid. After discharge only zinc 2 plus remains in solution. So the exact answer is zinc sulfate solution. Next is which of the following half reaction represents a reduction process? So there reduction is gain of electron. Cl2 gain electrons to form chloride ion. D option is also reduction. अगर आप इस पे गौर करें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके H2 बना रहे हैं, बट C ये जो यहाँ पे Cl2 है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो क्लोराइड आयन बनाता है इज स्पेसिफिक एंड क्लियर ऑप्शन बिकॉज इट्स ए डायरेक्ट एंड क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो द एग्जैक्ट आंसर इज C option. Next is which of the following half reactions represents the oxidation process occurring in the disproportionation of copper ion? Their disproportionation involves a single species being both oxidized and reduced. अगर डिसप्रोपोर्शनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सिंगल स्पीशीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होती है उसी रिएक्शन में और साथ साथ रिड्यूस भी होती है. फॉर Cu+1 ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम Cu2+. अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी के ऊपर अगर आप गौर करें, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये ओवरऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को यहाँ पे शो कर रहा है, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है. जिस तरह देखें Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट से Cu2+ में चला गया, ठीक है, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टेट, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई. इसी तरह Cu+1 यहाँ Cu0 पे चला गया, मतलब यहाँ रिडक्शन भी हो रही है. ये ओवरऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को शो कर रहा है. उसने यहाँ पे पूछा है हाफ रिएक्शन यानी कि एक रिएक्शन शो करे, या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन. तो डियर इसके लिए अगर आप ऑप्शन सी पे यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो Cu+1 ये कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, सिंगल स्टेप यहाँ पे शो हो रहा है. तो उसने पूछा भी सिंगल स्टेप ही है, तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इफ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन 2 हाफ सेल्स इन गैल्वानिक सेल्स देन द वोल्टेज डिक्रीज स्लोली, डिक्रीज रैपिडली, डज नॉट चेंज या ड्रॉप टू 0. तो देयर विदाउट ए सॉल्ट ब्रिज
charge accumulates in the half cells, preventing the flow of electrons and quickly stopping the reaction, thus dropping the voltage to 0. तो एग्जैक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, ड्रॉप टू 0. नेक्स्ट इज इन एन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट, if a charge of 96500 coulombs is passed through a solution, the amount of substance liberated or deposited at the electrode is directly related to mass number of the ions, 1 mole of electrons being transferred, or Avogadro's number of ions being discharged, or standard electrode potential of the metal ion. So there 96500 coulombs is approximately 1 farads, which is the charge carried by 1 mole of electrons. The amount of substance liberated is directly proportional to the moles of electrons transferred, Faraday's law of electrolysis के मुताबिक. So the exact answer is B option, 1 mole of electrons being transferred. Next is the experiment determination of Avogadro's number through electrolysis typically involves measuring the current and voltage applies, the mass of the substance deposited or liberated by known charge, the conductivity of the electrolytic solution, or the temperature change during electrolysis. There the Avogadro's number can be determined by relating the measured mass of a substance deposited by known charge, which represent a certain number of electrons, to the molar mass of the substance. So the B option, the mass of the substance deposited or liberated by known charge, ये exact answer है इस statement का. The principles of measuring DO means dissolved oxygen by Winkler's method is based on iodometry, acid-base titration, or complexometry. So there Winkler's method for dissolved oxygen involves a series of reactions that ultimately lead to the liberation of iodine, which is then titrated with thiosulfate and iodometric titration. So the exact answer is B option, iodometry. Next is a positive value for standard electrode potential of a metal ion, metal half cell, indicates that the metal is a strong reducing agent, the metal ion is readily oxidized. Third option is the metal ion is readily reduced, and fourth one is the metal will readily displace hydrogen from dilute acids. There a positive E0 indicates a strong tendency for the reduction half reactions to occur spontaneously. For Cu2 plus over Cu, a positive E0 means Cu2 plus readily gains electron to form Cu. So the C option, the metal ion is readily reduced, ये exact answer है इस statement का. Next is which of the following changes would typically leads to an increase in the rate of electrolysis? Decreasing the concentration of the electrolyte, increasing the distance between the electrolytes, or decreasing the surface area of the electrolytes. Fourth one is increasing the current passed through the electrolytic cell. So there the rate of electrolysis means amount of substance deposited or liberated is directly proportional to the current passed. Faraday's first law of electrolysis के मुताबिक. Higher current means more electrons flowing per unit time. So the D option, increasing the current passed through the electrolytic cell, ये exact answer है. डियर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले. वीडियो देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.